हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज। आई होप आपण माने भलर थिबे। देखंतु आज यहाँ माने कोन करिबा मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिबा, जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसबा। आपण माने जदि चाहउछंती एही परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिबा को ताले डेफिनेटली आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये करि पारे। जदि आपण माने चाहउछंती आपण मानकर रिविजन करिबा को ता सहित आपण मानकर कॉन्फिडेंस मध्ये होई परिबो। जदि आपण माने ये चैनल को डेली फॉलो करेंगे ता सहित आपण मैंने शेयर करेंगे। ठीक अच्छे, देखो आज प्रथम क्वेश्चन होमर व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई। आमर देखो व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड कंपोनेंट अटे ऑफ द मनी सप्लाई। देखो ए M0, B M1, C M3, D M4। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी M1। M1 includes currency with public demands and depositing and other liquid asset, making it the most liquid component। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आमर हु रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इंडिया। आमर मनी सप्लाई को भारत में किए रेगुलेट करे? ए सेबी, बी RBI, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी नीति आयोग। देखो यार सठिक आंसर हो कमेंट भी करेंगे आमर मनी सप्लाई को भारत में किए रेगुलेट करे। देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी RBI। ठीक अच्छे, आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द मनी सप्लाई यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक CRR, SALR एंड OMAO एंड रेपो रेट। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आमर प्राइमरी कॉज कहले कौन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, B decrease in aggregate demand, C excess demand in the economy, D fall in money supply। देखो यार सठिक आंसर होमर ऑप्शन नंबर सी एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक अच्छे, आमर कहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेटेड डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एंड लीडिंग टू हायर प्राइसेस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहले जितेबाला आमर एग्रीगेट डिमांड होता है एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई एंड लीडिंग टू हायर प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आमर निम्नलिखित मानक मध्यरु आमर क्वांटिटेटिव टूल कहले मॉनेटरी पॉलिसी रे केउटा अटे? देखो ए मोराल सुएशन, बी ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी क्रेडिट रेशनिंग, डी मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो यार सठिक आंसर हो आमर ऑप्शन नंबर बी ओपन मार्केट ऑपरेशन OMAO। OMAO कहले कौन? ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेगुलेट लिक्विडिटी एंड मेकिंग इट क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर व्हाट डज इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडियन रिफर टू? ए फिक्सिंग इन्फ्लेशन रेट एट 0%, बी RBI मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट रेंज, सी अलाउिंग फ्री मार्केट डिटर्मिनेशन इन्फ्लेशन, डी गवर्नमेंट सेटिंग इन्फ्लेशन रेट्स। देखो तो व्हाट डज इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडियन रिफर टू? यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी RBI मेंटेनिंग इन्फ्लेशन विद इन ए टारगेट रेंज। आमर इन्फ्लेशन को टारगेट कराए बिटवीन आमर रेंज रे। ठीक अच्छे, से यार सठिक देखो आम बिटवीन इज 4% एंड 2% अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2016। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमर व्हिच इन्फ्लेशन मेजर डज RBI यूज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। क्यों इन्फ्लेशन मेजर ओके डज RBI यूज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन? ए होलसेल प्राइस इंडेक्स, बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी GDP डिफ्लेटर, डी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, RBI यूज CPI इन्फ्लेशन आल्सो कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन एज द प्राइमरी बेंचमार्क। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो व्हाट हैपेंस व्हेन RBI इंक्रीज द रेपो रेट। जितेबाला आमर RBI इंक्रीज करता है रेपो रेट ताले कौन घटी था? देखो ए बोरोइंग बिकम्स चीपर एंड बी मनी सप्लाई इंक्रीजेस, सी इन्फ्लेशन राइजेस, डी लोन्स बिकम कॉस्टलियर। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी लोन बिकम कॉस्टलियर। हायर रेपो रेट डिस्करेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग thereby reducing inflation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। निम्नलिखित मानक मध्यरु आमर देखो केउटा नॉट कंट्रीब्यूट टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केउटा अवदान नुहे? देखो ये देखो राइज इन आमर ऑयल प्राइसेस, बी वेज हाइक्स, डी सी देखो इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड एंड डी हूँ सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर आमर सी increase in consumer demand and costful inflation is caused by higher input cost rather than
डिमांड साइड फैक्टर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए स्टैगफ्लेशन कहले कौन स्टैगफ्लेशन कहले कौन ये देखो लो इनफ्लेशन विथ हाई ग्रोथ बी देखो हाई इनफ्लेशन विथ हाई ग्रोथ सी हूँ हाई इनफ्लेशन विथ स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ डी हूँ डिफ्लेशन विथ जीडीपी ग्रोथ यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी हायर इनफ्लेशन विथ स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगफ्लेशन कहले रिफर्स टू a situation where inflation is high despite the economic stagnation, making policy response difficult. Next question देखो next question है which of the following is an anti-inflammatory measure? हमारो ये है देखो तो decreasing CRR, B increasing government spending, C selling a government securities, D lowering interest rate. यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज absorbs excess money from the system reducing the inflationary pressure. Next question देखिबा next question है inflation reduce the purchasing power of which type of income in the most. देखो तो ये है fixed income, B है variable income, C rational income and D है business profit. देखो तो inflation reduce the purchasing power of which type of income the most. यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड इनकम। हमारे जो इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम्स पेंशनर्स एंड सैलरी एंड एम्प्लॉई द मोस्ट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन ये प्राइस इंक्रीज ग्रेजुअली बी डिमांड डिक्रीजेस सी करेंसी लॉसेस वैल्यू रैपिडली डी देखो सेंट्रल बैंक इंक्रीज इंटरेस्ट रेट आमर व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन जो आम हाइपर इन्फ्लेशन होता है यह कौन हैपेन होता है यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे करेंसी लॉसेस वैल्यू रैपिडली हाइपर इन्फ्लेशन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन वेयर मनी सॉ लॉसेस इट्स वैल्यू रैपिडली जिम्बाब्वे 2008 एग्जांपल ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेस मॉनेटरी एक्सपेंशन What type of inflation is caused by excess monetary expansion? A. Demand pull inflation, B. Cost push inflation, C. Structural inflation, D. Imported inflation. Here सठिक आंसर है देखो तो ऑप्शन नंबर ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन when too much money chases too few goods and demand pull inflation occurs ठीक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म ऑफ फिलिप कॉर्प डिस्क्राइब फिलिप कॉर्प कहले कौन ओके ठीक अच्छे ये देखो तो रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन बी रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट सी हूँ रिलेशन बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड ग्रोथ डी देखो तो रिलेशन बिटवीन आमर इंटरेस्ट रेट्स एंड ग्रोथ व्हाट डज द फिलिप कॉर्प डिस्क्राइब यार सठिक आंसर है देखो तो ऑप्शन नंबर बी रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे आमर फिलिप कॉर्प कहले रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड आमर अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेविंग ये देखो तो रियल वैल्यू ऑफ सेविंग डिक्रीजेस बी देखो सेविंग इंक्रीज सी इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट राइज डी नो इम्पैक्ट यार सठिक आंसर है देखो रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स डिक्रीजेस इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ सेव्ड मनी ओवर टाइम ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड ए कोर इन्फ्लेशन बी फूड एंड फ्यूल प्राइसेस सी ओनली WPI इन्फ्लेशन डी रियल जीडीपी ग्रोथ यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी फूड एंड फ्यूल प्राइसेस हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स ऑल प्राइसेस चेंजेस इंक्लूडिंग volatile फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यू दैट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ मॉनेटरी फेनोमेनन ए केन्सियन इकोनॉमिक्स क्यों आमर इन्फ्लेशन ऑलवेज ए मॉनेटरी फेनोमेनन क्यों इकोनॉमिक स्कूल थॉट ओके बी देखो तो मोनेटारिस्ट स्कूल सी क्लासिकल इकोनॉमिक्स डी मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स यार सठिक आंसर है देखो तो ऑप्शन नंबर बी मोनेटारिस्ट स्कूल एंड मिल्टन फ्राइडमैन मोनेटारिस्ट आर्ग्यूड दैट इन्फ्लेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू एक्सेस मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडेक्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रूरल इन्फ्लेशन इन इंडिया क्यों इंडेक्स आमर देखो रूरल एरिया रे किपरि भाव इन्फ्लेशन होता है ताको मेजर करिथा ए हूँ CPI रूरल बी WPI सी हूँ CPI अर्बान डी हूँ जीडीपी डिफ्लेटर यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए मन रखिए CPI रूरल ठीक अच्छे CPI रूरल मेजर्स रिटेल इन्फ्लेशन
इन रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। ये होची रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, डी रेशियो टू रियल टू नॉमिनल जीडीपी, सी होलसेल प्राइस इंडेक्स, डी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर ए, रेशियो इनकम नॉमिनल टू रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच कमिटी रिकमेंडेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। क्यों कमिटी आमर भारत रे इन्फ्लेशन को मेजर करता है टारगेट रे टारगेट करता है। देखो ये होची रंगारंजन कमिटी, बी नरसिम्हन कमिटी, सी उर्जित पटेल कमिटी, डी केलकर कमिटी। यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल कमिटी आमर 2014 recommended the inflation targeting and the adaptation of CPI based inflation and measurement। ठीक है, यह कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसीबे, ता सहित आपण मानकर प्रैक्टिस ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्य एंड आपण मान कॉन्फिडेंस मध्य गेन होई परिबो। ठीक है, आपण माने जदि चाहू एही भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिवे ताले आपण माने ताले ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ता सहित कमेंट मध्य करि परिबे। आपण माने भी निश्चय कमेंट करि परिबे केन प्रकार वीडियो मध्य आमे माने तयारी करि परिबे। ठीक अछि, ताले आपण माने जदि चाहउछंती आपण माने कर जदि सो इच्छा कोन होची ताले आपण माने कमेंट करि परिबे केन प्रकार वीडियो मध्य आमे माने तयारी करि परिबे। ठीक अछि, सेति पई म आपण थारे विदाय नेउची। परवर्ती वीडियो रे एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिबा।